Capital investments also have been going up from the budgetary side. When we did the UP Global Investor Summit in 2018, about 4.8 lakh crores worth of MOUs were received by us, and we have been able to translate about 4 lakh crore worth of intents into the actual investments which have been realized till date. Now, going forward, we are targeting that in the Global Investor Summit, we should now be able to achieve at least 15 to 17 lakh crore worth of investments, and that is the aim with which we are here, and we seek your participation in the investment in UP. Now, looking at the economy strength of UP, what you can see is during even the COVID times, there was the least, recession in the growth rate of UP as compared to others, right from the world rate to the rate of the nation. And during the past 5 years also, the Uttar Pradesh has been growing significantly at a rate of CAGR of 8%. Now, over the past 5 years under the leadership of Honorable Chief Minister, UP has focused a lot on building infrastructure. So there has been a network of about 2,000 kilometers of expressways which is coming up, of which about 1,300 kilometers is already operational. Now, this has had the advantage that even the Purvanchal and even the underdeveloped areas have got connected, and those have also become available now for investments, and now significant investments are coming up there also. We are also a beneficiary of the Eastern and Western Dedicated Freight Corridor, which is passing through UP, and Government of India is significantly contributing to it, and we are also playing our role. In the airports development also, UP is coming up with 19 airports. 9 of them are already operational, and 10 more are being made operational. 5 of them are going to be international airports. 3 of them are already functional. 2 airports are coming up. One is in Jewar and the other is in Ayodhya. So in terms of connectivity also, there has been a significant improvement, and the movement of goods and services is now becoming faster. The RRTS is also coming up, and we have also been able to develop the India's first inland waterways terminal in UP. So this is again, basically now we are trying that the landlocked status which UP had, now it no longer remains a disadvantage to the investors and for the exports. In terms of governance improvements, on various indicators, right from good governance to leads rankings to ease of doing business, UP has done remarkably well, and we have progressed, and now we are amongst the top states in the country. In terms of policy environment, we have updated our policies, we have benchmarked with the other states' policies, and now we have come up with about 25 policies. There is an overarching industrial policy also, and it gives multiple options for choosing the incentive structure. So this is the policy sort of framework which we have created for the investments, and we have identified various sectors in which the investments can come in. Some of the policy incentives are reflected here. I will not like to go into the details here. We have distributed brochures also, and these are available on our website also. Now, in terms of skilled manpower, UP is rich. About 56% of the total population is in the working age. We have the second highest number of foreign students studying in UP. So it is about 5,000 students which are studying in UP. The number of higher educational institutions are also very significant. More than 8,000 institutions are there. And in terms of vocational education also, we have a large network. There is a skilled and trained manpower of over 15 lakhs which is available. And we have premium institutions also located in UP, right from IIT Kanpur to IIM Lucknow to IIIT Prayagraj. Most of the important institutions are there in UP. We are also focusing on cluster development because investments can come in where there is an ecosystem available. So we have created a network of parks also, and this network is only growing. Land bank is not an issue right now, and we have through our policies also created an ecosystem whereby if you need land, the state will facilitate the availability of land also. There is a private industrial park policy which we have updated. There is a land aggregation policy, and there is a fast track allotment policy also, so that you do not have to, the major investors do not have to go through the
auction process, and we allocate them land directly if the project is good, and if it is more than 500 crores of worth. In terms of clearances, because this is one of the biggest headaches which an investor faces, we have created a Nivesh Mitra portal where more than 350 clearances are already available. The Nivesh Sarthi portal basically has been created where once you sign an MOU with us and we recognize that you are a willing investor in UP, we will be hand-holding you in terms of all clearances. You can put up your questions here itself, and these queries will be addressed on the Nivesh Sarthi portal itself. For disbursement of incentives also, we have created an online incentive management system where you have to, after you become operational, and whenever your incentive becomes due, you can just log on to this portal through your registration ID, and we will be processing the incentives which you are supposed to be getting through the policy. Now, this is basically, these are the focus sectors. I will not like to dwell much in detail. I mean, the details are already aware. Defense and aerospace is one of the key sectors in which UP is seeking investments. You might be aware that UP is one of the 2 states where 2 defense corridors are coming up. One is coming up in Tamil Nadu. The second is in defense, is in UP. So we are developing 6 nodes. There is sufficient land bank available. We have also got major investments from BrahMos, from Bharat Dynamics Limited, from Adani Ammunitions, etc. And there is about more than 1,600 hectares of land bank which is available there. Since we are developing Jewar Airport also and a network of airports, there is a lot of opportunity in the aerospace segment also. So that is something which can be looked at. In terms of electronic manufacturing, UP is, especially Noida area, is the biggest hub of manufacturing of mobiles and home appliances. So this is another significant strength, and therefore we are looking at investments into the semiconductor fab units also, and we have an attractive semiconductor fab policy also, and which is providing better incentives than any other states. IT/ITS is another sector in which we are trying to seek investments. Because of the network of expressways and dedicated corridors, etc., which we have created, the logistics and warehousing opportunities have come up, and we have recently come up with a policy which is providing incentives for building private freight terminals, for berthing terminals, for logistic parks, etc. This is one area which can be looked at. Data center policy has been picked up very well, and we have the entire country's capacity equivalent to that coming up in Noida, Great Noida area. So this is another area we have one of the best policies available. Agro and food processing is an obvious choice because basically UP is an agrarian state. EV is another area in which we are seeking significant investments, and we have a very vibrant EV policy. Close to western part of UP, there is a significant ecosystem available, and we seek participation in the EV manufacturing hubs also in UP. Renewable energy is another area. We have policies from bioenergy to solar energy also in place, and UP has in Bundelkhand and in Mirzapur Sonbhadra area, a lot of potential is there for putting up these plants. Textile and apparels has been our strength, and we have updated the policy and made it more lucrative. Tourism is an obvious choice, and we have come up with a policy which is now enabling the heritage sites also to be picked up by the private segment and developed into resorts and sites also. This will be through a bidding process, and UP, every district has a lot of potential where these can be picked up. Pharma and healthcare, education, skills. On the innovation ecosystem also, we have put in a lot of investments. We have developed center of excellences, we have developed incubators, we have tied up with various institutions. And now the result is that about 7,600 startups are registered in UP, and this ecosystem is only growing. Real estate obviously is another choice, and in the film side also, Mumbai being the destination of film producing, we are coming up with a film city. The bids are already out. This is being developed in 1,000 acres of land, and we are seeking investment there. The last date of the completion of the bid is 7th of January 2023. And we hope to get good studios to be able to create a film city there in UP. Now, I'll just like to make 2 more slides. The entire purpose is that the last mile also faces
and experiences the fruits of the development, and we take everybody along the development path. So whatever development we do has to be inclusive. Now, this has been the result, as was being mentioned, that we have traveled to 16 countries and 21 destinations, and there was a very good response from these destinations. And we were able to get intents worth about 7 lakh crores from these global roadshows, and we hope that the state roadshows will also be as encouraging. Now, this is basically the event from 10th to 12th of February. Honorable Prime Minister will be inaugurating. Honorable President will be concluding. And we are also having a trade show there with all these 6 kind of events there, right from Startup and Innovation Summit to Buyer-Seller Meet to trade show to vendor development programs and ODOP showcasing, which is one of the biggest strengths of UP. So thank you very much for sparing time, and thank you CIA also for organizing this event. Thank you. Thank you very much, sir, for this detailed presentation. और देखिए सज्जनों, जैसा कि आपने देखा, एक बहुत ही अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश में निवेश की तरफ, और ये संभव हो पाया है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से सभी के साथ परामर्श कर, उनकी सलाह लेकर, सबको विश्वास में लेकर नीति निर्माण किया है। और आज भी जब हम अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रहे हैं, उसके सक्सेस की तरफ हम सभी के परामर्श के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसकी तरफ हमारे साथ मंच पर श्री संजीव बजाज जी हैं, who brings in the voice of the industry, being the president of CII and further the chairman and the managing director Bajaj Finserv Limited. I would like to now invite him for his critical opinion, his views, as I request him for his industry perspective. माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, other guests on the dais, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me first start by thanking the Honorable Chief Minister for allowing CII to partner for this upcoming mega summit in UP between the 10th and 12th of February. The Chief Minister and his team are leading from the front, as always. That's why you're seeing them over here at this meet. The Additional Chief Secretary talked about, and Anshuman talked about the roadshows that have happened all over the world to attract investment into the state of UP, and a number of significant measures that we have just seen in the presentation that the state is progressing with to be able to attract investment across so many different areas. Let me point out to a few of these notable initiatives. One, an entire enabling policy framework that will focus on job creation and sustainable development. ऐसे नहीं कि development एक ही जगह में होगा, sustainable development. There are 25 sectoral policies that are now in place, and with the focus, the larger focus on Made in India, within that the focus on Make in UP, this will foster entrepreneurship and innovation. The industrial and employment policy is also focused, as we again saw in the presentation, to make life easy to set up business. And as CII, we are happy to say that the single window system has emerged as the best among competitor states. The state's focus on MSME promotion as well as on startups is another laudable initiative, because we know that the largest number of businesses in any country, including in India, are small businesses. No company starts big. Every company starts small, and by nurturing, supporting small business, we will create the future global companies of India.
The warehouse and logistics policy of 2022 is also much needed and will provide the supply chain linkages that any business, any consumer needs. There are many other initiatives, and we have seen that in the presentation, so I'm not going to repeat that. But as CII, we would like to invite all our industry brethren to come to the summit, to come and see what UP has to offer, so that with your own eyes, you can see the change that is taking place in UP. Now, it is easy for me as CII president to be saying this, और आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि आप क्या कर रहे हो? So I'll give you our example. I run Bajaj Finserv, which has interests in finance, in lending, and in insurance. और करीब 6-7 साल पहले तक, we were present in about 30 or 40 cities and towns in UP. We had a national presence otherwise. But seeing the development of the state, starting with very stable law and order situation, आज law and order हो on the ground, तो business बढ़ते हैं, आम आदमी को confidence आती है, they start spending, and that is where financial services की ज़रूरत पड़ती है and opportunity पड़ती है. In the last 6-7 years, 30-40 शहरों से we are now in 340 cities and towns. और इसमें एक और मुख्य चीज बोलना चाहता हूं मैं कि neither Chief Minister ji nor anybody else I have ever met before, they have not come to me to come to UP. We have gone to UP because as private sector, we are looking for business, where the business environment on the ground जहां अच्छी हो, private sector आएगी वहां. And that is my only one, I would say, suggestion, if I may make to the state leaders, कि इंडिया बढ़ेगा तो हर राष्ट्र इंडिया में बढ़ने वाला है. And the good thing that we are seeing in India in the last 10 years is multiple states are focusing on growth. आज आप महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, this is the most industrialized state in the country. But every state is competing. Past success कोई guarantee नहीं है future success की. And looking at the enthusiasm, the interest and the work that has been done by UP, I would urge our friends in other states also, कि please stay abreast, otherwise UP is going to go way ahead. As we celebrate 75 years of India's independence, we also lay the foundation for our Amrit Kal. And in this, all of India has to work together. As CII, we are both very proud and very committed to work with the state of UP to ensure कि ये जो development होगी, ये inclusive होगी, balanced होगी, and sustainable होगी, so that UP grows, India will grow. I would like to thank the Chief Minister and his team once again for giving CI this opportunity to work with you, and we are committed कि ना ही सिर्फ इस summit के लिए, but we will work with you on a continuous basis to help make UP one of the foremost states in the country. Thank you. Thank you very much, sir, for your very inspiring address और अपने खुद के अनुभव सभी के साथ साझा कर सभी में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत करने का. और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे अनुभव श्री दर्शन हीरानंदानी जी का, CEO हीरानंदानी ग्रुप. Would like to mention here, ladies and gentlemen, that he's setting up India's largest and hyperscale data center in Uttar Pradesh. So his experiences, we invite Mr. Darshan Hiranandani. Thank you. आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी जी, रविंद्र जायसवाल जी, officials of the UP government, अवस्थी जी, त्रिवेदी जी, अरविंद कुमार जी, मेश्राम जी, CII के पदाधिकारी संजीव बजाज जी, दीपक जैन जी, अंशुमन मैगजीन जी. योगी जी, आपके अनुमति से, क्योंकि हम आज मुंबई में हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं, तो मैं इसलिए अपने दोस्तों को अपने बम्बई हिंदी सहन करने के लिए मजबूर करने के बजाय अंग्रेजी में बात करूंगा. Friends, for all of you here, our group is best known
for building property in Mumbai. What many of you are not aware that the data center division that we have founded and I chair, called Uttar Data Center Services, is amongst the largest owners of data centers in India. And in fact, our data center in Panvel is the world's largest tier 4 data center in operation and the most energy efficient in the tropics. Incidentally, the reason that I bring that up is that my experience in Uttar Pradesh has to do with this division. In 2020, one of the largest tech companies in the world, who I cannot name due to my non-disclosure obligations, approached me to give them data center capacity in the national capital region. That is in the middle of COVID in August 2020. In September, we approached 3 states in that area. UP responded fastest, that is in 48 hours. As you all will recall, there was a strict lockdown at that time. Using drones, and my father will be mortified here, because we couldn't visit the site. We finalized the location and completed all due diligence within 30 days. We applied to the UP government in September, and by October, I was given a letter of allotment. This all happened virtually and through email. Sorry. In November, the Honorable Chief Minister virtually conducted the groundbreaking ceremony. December, we signed our first contract for a portion of the facility with the same large tech giant. At that time, I was not nervous. I was nervous not knowing the demand. I intended to only invest 1,600 crores in UP in phases. By early March, we received all permits. Incidentally, all done online. Nobody could travel. And we broke ground. We received such a tremendous customer response, we expanded our plan immediately to 7,000 plus crores in phases. We received many customer confirmations by July 2022. By 2023, by the end of this year, an investment of 6,500 crores shall be completed on that site. Ultimately, this will be a 250 megawatt site with close to 40,000 crores of building, hardware, and technology, which I will see completed in the next 5 years. We went live with the first phase of this facility in October 2022, which the Honorable Chief Minister graciously inaugurated, for which I remain immensely grateful. By the way, this is one of the world's largest data center parks. Each building is about 500,000 square feet, consuming 50 megawatts of power. It required 220 kilovolt lines to be connected from 25 kilometers away. I can promise you, whether it is UK, US, frankly, anywhere in the world, getting this done in 13 months is an unheard of achievement. The UP government's cooperation and focus has made this happen. We have gone live and started billing our customers since November 2022. For an investment of this size, in a short timeline of 24 months from idea to implementation, is something we have never experienced in our 40 years of our group's history. I believe UP's success has come due to 4 step-by-step measures under the fantastic leadership of Yogi ji. First measure, law and order, and Sanjeev referred to it, Kanun ka Samman. The reason I make this point is that a state that cannot look after the well-being and safety of its own residents cannot look after the well-being and safety of our investment. To that end, I want to recall a discussion back in late 2020. Yogi ji had made a short notice trip to Mumbai just before the second wave, and I couldn't fly to Mumbai from Dubai due to COVID restrictions. I asked my father, please drop in and see him, and amongst other things, he asked Yogi ji. Said, sir,
यूपी में प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दर्शन काफी एक्साइटेड है, लेकिन अगर कोई लोकल गुंडे प्रॉब्लम करे तो किससे बात करे? I remember my father telling me, Yogi ji's instant response, आपको इस विषय के बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूपी में गुंडे या तो अंदर है या नहीं है। And I can tell you, in UP, it is 100% true. There is no gunda problem at all. Can you imagine building a large project in India and not having a local hafta lobby or a local politician asking you to appoint security agencies, contractors affiliated with him? There is nothing there. It is amazing to see the law and order transformation under Yogi ji's leadership. Step 2, UP's policy-based approach. सब कुछ नीति के अनुसार. No special favors to anyone. These are very forward-thinking investment policies that are uniform and consistent for all, which they keep improving and evolving based on experience. This gives every investor massive peace of mind, as you're not worried about any harassment down the road because someone has used discretionary powers. While the UP government has incredible investment policies, their biggest strength is mindset. Mindset of the Chief Minister and mindset of the government. And that comes for me, step 3 after law and order and right investment policies is Mansikta mein badlav, change in mindset. I am a massive fan of Yogi ji for his transformational approach in this area, where it's just not his own innate ability, his incredible work ethic, his integrity, but it is his ability to inspire and get the best foot forward for every government official and to transform their mindsets. I had several interactions with the Honorable Chief Minister where he did the virtual foundation so on, did the inauguration facility, when the facility went live, and fortunately at numerous under events. We interacted in several of the Invest UP programs as well. In the entire endeavor, I met Yogi ji only one-on-one in his office, first time, to discuss our project, and that too because I had started this large investment and made my first post-COVID trip to UP, and I was keen to hear if he had any concerns. I didn't have any issue. His team itself is so effective. The best part is when I say Team UP, it is not just the officers here, Arvind Kumar ji, who you see here, who I remain grateful to because he has gone above and beyond my expectations many-fold, or officials in the CM's office like Avnish ji, Amit ji, and others in a similar manner. But the pride, focus, and diligence of the entire UP government under the leadership of Shri Yogi Adityanath ji is absolutely incredible. Nandi ji has also played his part in giving immense support to the officers of Invest UP. But I ask a question. Why did we succeed? Simple. From day one, our discussions with them have been extremely transparent and open. What we need, why we need it, when we need it. With that in mind, once they give us the green light, they have ensured that we encounter no delays. And that I would call as step 4. Nishpadan or Vitaran par atyek dhyan, ruthless focus on execution and delivery. A lot of states have good policies and make a lot of promises. But under Yogi's leadership, jo UP कहता है, UP करता है. What they promised me, they've delivered, and they have shocked us, private enterprise folk, in terms of what they can get done and how fast they can get done. What I found incredible was with the open relationship, UP government officials on looking at my plans, my work progress told me, sir,
this legislation is not updated to take into account the needs of data centers. You will need to worry about it 12 months later. Let us proactively start working on seeing what's to be done so the whole industry doesn't have a problem. Let us conduct an industry workshop, get everybody's suggestion and move ahead. This approach is refreshingly fantastic. People get swayed by the media. I know there's a lot of media here on what goes on in UP. I can tell you, proof in the pudding is in the eating. My experience in building this data center in UP, executing a several thousand crore project in less than 24 months, in terms of support from the government, in terms of infrastructure connectivity, cooperation and permitting, exceeds even that of Dubai, where I lived for 18 years. For us industry folks sitting in Mumbai, we get, concerned with, what is a priest or a yogi doing as a chief minister? Maybe he knows only about religion and temples. What does he know about industry and governance? Being in business, I'm disallowed to have or express a political opinion. But as an investor in the state, I can tell you my experience and looking at an absolute corruption-free, I repeat, corruption-free setup focused on growth, infrastructure, economic and social development with a diligent, proactive and honest ecosystem to work with. I hope we can find and replicate more people with qualities like Yogi ji to run other states in our country. Yogi ji के नेतृत्व में UP बदल गया है. The change in UP is at every level and especially on the ground under Yogi ji's leadership. And this gives me hope that with the right leadership, even the parts of our country that we thought were hopeless and impossible to change can be the forefront of success where all of us from Mumbai want to go and invest. With that, I want to welcome all of you to invest in Uttar Pradesh, which I now feel a part of as well, and to work with Invest UP. I can guarantee you that you will not be left out. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Hiranandani, for sharing your real-time, on-ground experiences, which you had virtually as well as physically. And as you saw, ladies and gentlemen, there's a very conducive environment which has been created by the Honorable Chief Minister. It's created a runway for the investors, for your businesses to take off and soar greater heights and touch the sky with glory. So, ladies and gentlemen, you heard about the advantage of Uttar Pradesh, you heard about the experiences of our industrialists. And now we would like to further bring you a short video which extends testimony to what has been spoken and what has been shared with all of you and further reinforces the investment and the business attractiveness of the state of Uttar Pradesh. If you can have the video, please. The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. Nations like Singapore, UK, Netherlands, Denmark, Mauritius, Japan, Australia confirmed their participation as partner countries for GIS 2023.
Concurrent to the summit, an exhibition will also be organized from 10th to the 14th of February, where companies from India and overseas will participate to showcase their technologies, innovations, investment opportunities, investment potential, and have B2B interactions. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations. Delegations from the state already traveled to 21 cities in 16 countries and garnered more than 7 lakh crore rupees of investment intents. Imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform, and transform, Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Express Pradesh. What's more, it's 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub, and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure, and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, new India's growth engine. So ladies and gentlemen, come to Express Pradesh and make it your most profitable preferred investment destination. और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री नंद गोपाल गुप्ता जी को, जो लोकप्रिय रूप से नंदी के नाम से जाने जाते हैं, हमारे औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री। सर्वप्रथम आज के इस रोड शो में 25 करोड़ प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए सतत समर्पित उत्तर प्रदेश के वर्तमान और भविष्य के शिल्पकार,
कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का देश की आर्थिक राजधानी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, कर्मठ एवं परिश्रमी IIDC श्री अरविंद कुमार जी, एशियस फाइनेंस श्री प्रशांत द्विवेदी जी, एशियस टूरिज्म श्री मुकेश मेश्राम जी, CEO हीरा नंदानी ग्रुप, बहुत ही ऊर्जावान, और अभी आपने देखा कोई ऐसे ही ताली नहीं बजाता, जब मन से दिल से कोई सच्ची बात होती तो ऑटोमेटिक हाथ उठता है और तालियां बजती है। तो अपना एक्सपीरियंस जब उन्होंने शेयर किया तो तमाम लोग ताली बजा रहे थे। बहुत ही ऊर्जावान मैं हीरा नंदानी ग्रुप के CEO श्री दर्शन हीरा नंदानी जी, CEO CII उत्तर सेल्स के क्षेत्र के चेयरमैन श्री अंशुमान जी, CII के प्रेसिडेंट श्री संजीव बजाज जी, CII उत्तर क्षेत्र के डिप्टी चेयरमैन श्री दीपक जैन जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियाँ, प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जब हम उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा पर नजर डालते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, जो दो तस्वीरें दिखाई देती है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश जो बदहाल था, जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, और जो सपा बसपा और पीछे की जो सरकारें थी लंबे समय तक कांग्रेस, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कभी नहीं सोचा कि इंडस्ट्री आए, कभी नहीं सोचा कि हॉस्पिटल्स हो, कभी नहीं सोचा कि हमारी हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो। हमेशा और हमेशा वोट की राजनीति करते रहे, जाति धर्म और पार्टी परिवार को केवल बढ़ाते रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, आज खुशहाल उत्तर प्रदेश, और यह अमूल चूल परिवर्तन केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक परिश्रम से ही संभव हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 25 करोड़ प्रदेशवासी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए 2017 से बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए निरंतर कार्य करते रहे। हमने उनके चेहरे पर कभी कोई निराशा या थकान नहीं देखी। दिन रात 24 घंटे बिना किसी भी थकान, बिना किसी चिंता के, वो एक ही चिंता रहती है कि उत्तर प्रदेश देश में अव्वल कैसे बने। उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 में उत्तम प्रदेश बना है, अब हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं। और ये इस एक साल में दिखाई पड़ा, अभी 10 महीने 9 महीने जो हुए, इसमें दिखाई दे रहा है आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की धूम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सुशासन, सेवा, सुरक्षा के रोल मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश जातिवाद, परिवारवाद, अपराधीकरण के दौर से आगे निकलकर रैंकिंग और रिकॉर्ड की दौड़ में शामिल हो गया है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अतीत की प्रतिष्ठा, साथ ही वर्तमान और भविष्य की दशा और दिशा तय की है। हमने संस्कृति के साथ समृद्धि के मंत्र को अपनाया है। हमारी सरकार प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में 10, 11, 12 फरवरी को आर्थिक समृद्धि और औद्योगिक विकास के महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करने जा रही है। आप सभी को अभी पिछले दिसंबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में विश्व के तमाम देशों में GIS 2023 को लेकर के रोड शो संपन्न हुए।
16 कंट्री और 21 सिटी में जो हमारे रोड शो संपन्न हुए, विभिन्न मंत्री समूह और हमारी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने विश्व की तमाम प्रतिष्ठित कंपनियों को B2B, G2G बैठकों के माध्यम से GIS 2023 में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया और वहां से हमें 7 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस मुहिम को बेहद सकारात्मक परिणाम मिला है। हमें डिफेंस, मेडिकल, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, IT, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी, एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त हुए हैं। इसी श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के पहले जो डोमेस्टिक रोड शो में स्वयं आपके बीच में आकर के उपस्थित हैं, भारत को सक्षम और समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और योगदान है। जब विश्व की लीडिंग कंपनियों और उद्यमियों की सूची बनती है तो उसमें भारतीय उद्योगपतियों का नाम देखकर 130 करोड़ देशवासी गौरव और सम्मान का अनुभव करते हैं। उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा में भी लंबे समय से आप सभी साथी सहयोगी और सहभागी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि GIS 2023 के माध्यम से यह साझेदारी और अधिक गहरी और मजबूत हो। उत्तर प्रदेश में मां गंगा यमुना की, घाघरा नदी, गोमती नदी जैसी नदियों का विशाल सिंचित क्षेत्र होने के कारण प्राकृतिक रूप से बेहद संपन्न है। हमारे पास बहुत ही उपजाऊ जमीन है। देश की में सबसे 1153 किलोमीटर नदी का किनारा हमारे पास है, तो बहुत ही उर्वर जमीन है। हमारे पास देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर का निर्माण हो रहा है और उसकी भी बिडिंग पिछली माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ग्लोबल बिडिंग हुई और ज्यूरिक एयरपोर्ट ने बिडिंग करी, जो अभी हीरानंदानी जी, दर्शन जी बता रहे थे कि कितनी पारदर्शिता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ ग्लोबल बिडिंग हुई और ज्यूरिक जैसी कंपनी आकर के काम कर रही है। और हमें बताते हुए गर्व हो रहा है कि 2024 में हम जनवरी तक ट्रायल रन जरूर कर देंगे ज्यूरिक एयरपोर्ट में, जेवर एयरपोर्ट का। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो आज हमारे पास, जब हम सरकार में आए थे, केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक लखनऊ और एक बनारस। आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं। 9 एयरपोर्ट संचालित है, 10 पर काम चल रहा है। 5 बना करके हमने भारत सरकार में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया कि वो उसका संचालन शुरू करें। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त होने वाला है उत्तर प्रदेश को। अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, तो पूरे भारत का जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, पूरे भारत का जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, उसका 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करके देश को समर्पित किया, प्रदेश को समर्पित किया, तो 37.7% हो गया। अभी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। अभी हमारे साथ जो और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब देश के पूरे एक्सप्रेसवे का लगभग 50% उत्तर प्रदेश में होगा। हमारे अधिकारियों ने विभिन्न प्रगतिशील प्रदेशों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के गहन और व्यापक अध्ययन के बाद उत्तर प्रदेश की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लॉन्च की है। आज जो ये पॉलिसी लॉन्च की है, देश की सबसे अच्छी और आकर्षक औद्योगिक नीति है। इसी वजह से देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी धूम है। और हमने जो 10 लाख करोड़ का टारगेट रखा था, हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, वो हम जरूर 17 नहीं 20 लाख पूरा करेंगे। 20 लाख करोड़ का हम लोग उसका निवेश का जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया है, जरूर हम उसको पूरा करेंगे। हमारी सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के और निवेश सारथी ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को बेहद सरल, समयबद्ध और व्यवहारिक बनाया है। यह आयोजन संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम इन अवसरों का उपयोग करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में
सादर आमंत्रित करते हैं। आइए हम सब मिलकर के प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के उस सपने को साकार करने की दिशा में कंधे से कंधा मिला करके चले, कदम से कदम मिला करके चले, यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। आज अभी हीरानंदानी जी बोल रहे थे, ये गुंडे और ये माफिया, आप सोचिए 2014 में जब इस देश की बागडोर इस देश की जनता ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दी, कितने बम ब्लास्ट हुआ करते थे, कभी दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट, कभी मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट। उस दिन से, जिस दिन से एक 56 इंच वाले सीने के प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर दी, इस देश से आतंकी भाग खड़े हुए, और जब 2017 में प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में दी, तो ये जो प्रदेश के गुंडे और माफिया थे, जो इंडस्ट्रीज को डराते थे, हमारा लेबर रख लो, हमारा सिक्योरिटी गार्ड रख लो, हमारा मैनेजर रख लो। मैं मिनिस्टर था, मिनिस्टर रहते मुझे बम से उड़ा दिया गया था। मिनिस्टर को बम से उड़ाना मैंने पूरी सरकार को चुनौती देना। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज इंडस्ट्रीज भी और प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, और कोई भी व्यक्ति को कोई भी डराएगा, या तो गुंडे अपराधी जेल में हैं, या तो कुछ दूर चले गए हैं, कुछ बहुत दूर चले गए हैं जहां से आना असंभव है। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो विजन है, मैं खुद इंडस्ट्री चलाता रहा, इंडस्ट्री में किस तरह से जो लोकल गुंडे होते हैं, लोकल नेता, लोकल माफिया, वो किस तरह से हमारा आदमी रख लो, मंदिर बन रहा है, चंदा दे दो, इस तरह की चीजों से परेशान करते। तो आप सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व, उनकी विजन कि इंडस्ट्री चलाने वाले को इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दिया, तो इंडस्ट्री चलाने वाले को इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया, तो इंडस्ट्रीज के एक एक दर्द से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक कदम आगे चलेंगे, हम 4 कदम आपको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको 10, 11, 12 फरवरी का निमंत्रण देते हुए पुनः आपका सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी सज्जनों, उत्तर प्रदेश आज भारत के उज्जवल भविष्य का एक नवरत्न है, आगे बढ़ता जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हैशटैग योगीनॉमिक्स ट्रेंड कर रहा है। मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हैं, और वो इस कारण हो पाया है कि एक विश्वास लोगों में जागृत हुआ है, तो उसके लिए भी आपका विशेष रूप से धन्यवाद। और अब सभी की तरफ से मैं करबद्ध होकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि अपने पथ प्रदर्शक संदेश से हमारा मार्गदर्शन करें। उनसे निवेदन करती हूँ हम सभी को संबोधित करने के लिए। आज के इस रोड शो कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश सरकार में हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, एडवाइजर के रूप में शिवनीश अवस्थी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईआईटीसी श्री अरविंद कुमार जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी
श्री मुकेश मिश्राम जी, सीआईआई के चेयरमैन श्री संजीव बजाज जी, चेयरमैन सीआईए नॉर्थ रीजन श्री अंशुमान मैगजीन जी, दीपक जैन जी, और आप सबके सामने अपने अनुभव को साझा करने वाले हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ श्री दर्शन हीरानंदानी जी, आज के इस रोड शो में यहाँ पर उपस्थित देश के सभी प्रतिष्ठित हमारे बिजनेस लीडर्स, उद्योगपति, इन्वेस्टर्स और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, और उस प्रकार की प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा वहां पर है भी। भारत की विरासत की जननी के रूप में आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं, और इसलिए 25 करोड़ की एक विशाल आबादी को न केवल एक साथ समेट करके आगे बढ़ाती है, बल्कि आम जनमानस जब अपने रूट्स को भारत के अंदर ढूंढने का प्रयास करता है, तो उत्तर प्रदेश वह भूमि के रूप में उन सबके सामने एक उज्जवल भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। और उस उत्तर प्रदेश की धरती से आज आप सबको आमंत्रण देने के लिए मैं विशेष रूप से देश की इस आर्थिक राजधानी में आपके बीच में आया हूं। आप सब उत्साह के साथ यहां पर आए हैं, ये मुझे आनंदित भी कर रहा है और हमारी पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। मित्रों, हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को अभी मनाया है। अमृत महोत्सव का जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने जो पंचप्रण की बात की है, हर भारतवासी ने पहली बार देश के आजादी के इस उत्सव के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ते हुए देखा है। हर घर तिरंगा उसका एक उदाहरण है। आपने देखा होगा, सुदूर गांवों से लेकर के उन वनवासी क्षेत्रों में भी तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। ये इस नए भारत की वह तस्वीर है जो हर भारतवासी को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठा करके विकास की एक नई आशा उसके मन में एक नए उमंग के साथ जगा करके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हमने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया है, यह आनंद हमारे लिए और भी कई गुना बढ़ा है। जब जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, तो हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होती है। और मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में G20 की लीडरशिप भी मिली है। भारत G20 के दुनिया के उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व कर रहा है जहां पर दुनिया की 60% आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है।
दुनिया के 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है और दुनिया के 90% पेटेंट पर भी जिन देशों का अधिकार है, उन देशों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इसलिए इस नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रवर्तमान अभियान में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है, उसी भूमिका को आप सबके सामने रखने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से हमारी टीम आई है। और मुझे प्रसन्नता, इतनी भारी संख्या में आप सब मुंबई के इस रोड शो में यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा यहां पर जो प्रेजेंटेशन आपके सामने हुए हैं, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आपके सामने अपनी बातें यहां पर कही हैं। कहने के लिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। और अगर दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो 4 ही देश ऐसे हैं जिनकी 25 करोड़ से अधिक की आबादी है। स्वाभाविक रूप से संभावनाएं हमारे पास है। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें यूपी के अंदर संभावना ना दिखती हो। और पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर जो कार्य हुआ है हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर इन सभी सुविधाओं का बेहतर लाभ लिया है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड रखता है। अगर आप कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में ही अगर देखेंगे, हमारे पास देश के अंदर की कुल एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसमें से 11% हिस्सा यूपी के पास है। लेकिन अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश देता है। ये उत्तर प्रदेश, और मैं मानता हूं अभी कि अगर हम इस दिशा में थोड़ा प्रयास और कर लेंगे तो जितनी अभी तक हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, इसमें 3 गुना वृद्धि करने की सामर्थ्य अभी उत्तर प्रदेश रखता है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। प्रचुर जल संसाधन हमारे पास है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास है। डेयरी सेक्टर में अनंत संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा ना होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, लैंड बैंक, लोगों को प्रयास करना होता है। हमारे यहां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली। और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश ने आज एक बेहतरीन लैंड बैंक आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है और सभी और है। एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, आपने उसकी कहानी को देखा होगा। जब हम लोगों ने, मैंने 2017 में इसकी घोषणा की थी कि हम लोग जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, लोग मुझसे कहते थे सब क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी एयरपोर्ट बनना चाहिए यहां पे। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आपको मालूम है भट्टा पारसोल यही तो हुआ था गोलीकांड। तो मैंने कहा क्यों हुआ था? कहा कंपनसेशन को लेकर के। तो
तो मैंने कहा हमारे रहने पर कंपनसेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप आश्चर्य करेंगे कि हमने अब तक वहां पर ज्यूरिक इंटरनेशनल एजी के माध्यम से उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज के बाद थर्ड और फोर्थ फेज की लैंड भी हम लोग ले चुके हैं। एक भी विवाद नहीं हुआ है और जितने भी किसान हैं उन सब ने दुगने रेट पर, 4 गुना नहीं, दुगने रेट पर जमीन मुख्यमंत्री आवास पे आकर के मुझे रजिस्ट्री के कागज सौंप करके कहा कि हमारे यहां ये निवेश होना चाहिए। एक कॉमन मैन का सरकार पर क्या विश्वास है, इसका उदाहरण ये वही क्षेत्र है जहां पर पिछली सरकारों के समय में गोलीकांड होते थे, बड़े बड़े आंदोलन होते थे। पूरी दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है, कोरोना के सामने पस्त थी। कोरोना में यूपी की एक भी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई। हमने वहां पर सरकार की ओर से भी इंडस्ट्री को भी हमने प्रोत्साहित किया। जहां पे इंडस्ट्री को हमें लगता था कि उसे परेशानी है, उनके पास इतने संसाधन नहीं होंगे या हो सकता है उनके सामने और भी कुछ बात होगी, हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हम लोगों ने मिलकर के कोविड केयर सेंटर या कोविड हेल्प डेस्क के बनाने में भी योगदान दिया। हमने वहां पे चिकित्सकों की टीम भेजी, पैरामेडिक्स की टीम भेजी, हमारे टेक्नीशियंस वहां गए, उनका सपोर्ट किए। वहां पर हम लोगों ने उनको ट्रेन किया, लेकिन इंडस्ट्री बंद नहीं होनी थी, सप्लाई चेन बंद नहीं होनी थी, एक्सपोर्ट को हमने थमने नहीं दिया। परिणाम रहा, कोरोना जैसी महामारी ने हमारी गति को थाम नहीं पाया था और उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन मॉडल भी हम लोग देने में सफल हुए। ये सभी कार्यक्रम हम लोग जहां आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब जानते हैं औद्योगिक निवेश के लिए जो सबसे अच्छा बेस चाहिए वह एमएसएमई का एक क्लस्टर। यूपी के पास आज के दिन पर 96 लाख एमएसएमई की यूनिट है, ये रजिस्टर्ड हैं और इसने यूपी के अंदर जो अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश शासन की वह अभियान जिसने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी अच्छी डिजाइन हो, अच्छी तकनीक हो, उसके लिए अच्छा मार्केट मिले, उसकी ब्रांडिंग हो, इसे लेकर के हम लोगों ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आज वह देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का ही आधारशिला बना है और उस दिशा में हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए विगत 4 वर्ष के अंदर आपने इस बात को देखा होगा, 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आसानी से जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की। मुझे लगता है कहीं नहीं हुआ होगा कि अगर एमओयू हमारे पास 4,68,000 करोड़ रुपए के हुए थे और उनमें से 4 लाख करोड़ को हम लोग जमीनी धरातल पर उतार रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ है। कोविड-19 जैसी महामारी के बावजूद हुआ है और मैं इसलिए आज आप सबको आमंत्रित करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश ने अपनी 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई है। औद्योगिक निवेश के लिए जिस प्रकार का वातावरण चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी, हमारे पास जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, नेपाल से हमारी सीमा मिलती है लगभग 550 किलोमीटर की। बिहार, झारखंड, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश की सीमा इन राज्यों से और नेपाल अपने पड़ोसी मित्र देश से भी मिलती है।
ये सभी कनेक्टिविटी हमारी आज के दिन पे 4 लेन की है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये कनेक्टिविटी के हमारे बेहतरीन माध्यम बन चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हम लोगों ने 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के पास है, 16,000 किलोमीटर का। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। दोनों का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के जेवर में ही मिल रहा है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर रेल नेटवर्क है। एयरपोर्ट के बारे में आपके सामने अभी बताया जा रहा था। 17 तक केवल 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील थे। आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट हमारे पास पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। 10 नए एयरपोर्ट पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 5 एयरपोर्ट हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिए हैं एक एमओयू के तहत कि आप इनका संचालन करिए। इनके मेंटेनेंस आदि में जो खर्चा आएगा राज्य सरकार उसमें सहयोग करेगी। 5 एयरपोर्ट हमारे बहुत शीघ्र तैयार होने जा रहे हैं, जिनको भी हम एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्य करेंगे। लैंडलॉक्ड स्टेट से भी हम ऊपर उठ चुके हैं। देश का पहला वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है और इस दिशा में हम और भी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारी संभावनाएं हैं और इसलिए 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज आपके सामने है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी वैश्विक व्यापारिक समुदाय को हम लोगों ने इसके लिए आमंत्रित किया है। तो स्वाभाविक रूप से जो उत्साह दुनिया के अंदर देखने को मिला है, लगभग 7,12,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं और हम लोगों ने इस पे तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। स्वाभाविक रूप से देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है और इसलिए मैंने स्वयं इस बात को महसूस किया है कि मुझे घर के अंदर तो आमंत्रण देने के लिए स्वयं ही जाना चाहिए और इसीलिए मैं आज स्वयं मुंबई में आया हूं आप सबको आमंत्रित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं। आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप 0 है। आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप फिर देखेंगे निवेश मित्र, निवेश सारथी के साथ साथ इंसेंटिव देने की कार्रवाई भी ये सभी डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके पास जाएगा। आपको किसी कार्यालय के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ह्यूमन इंटरफेरेंस को 0 करने का प्रयास किया है और उसी दिशा में मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की इन अनंत संभावनाओं को, हर एक सेक्टर में जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में आप सब भी अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश सरकार आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश का जैसा बड़ा बाजार आपके पास है और इसका लाभ उठाएं, अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर बदलना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी देश की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वहां उस रास्ते को और सुगम बनाता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए आप सबको
10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सादर आमंत्रित करता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारी टीम के साथ मिलकर के आप उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करेंगे, उन सभी सेक्टर्स में उन संभावनाओं को तलाशेंगे जो न केवल आपके लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस रोड शो कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप सबको उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन निवेश के साथ बेहतरीन वातावरण देने का आश्वासन भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश को आप कैसे एक उत्तम प्रदेश और फिर एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तरफ जो आपकी सोच है, जो मंशा है, और किस तरह से आप उसे धरातल पर साकार कर रहे हैं, वे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री दीपक जैन जी को, डेप्यूटी चेयरमैन CII नॉर्दर्न रीजन and the Chairman and Managing Director of Lumax Industries Limited, to kindly propose a formal vote of thanks. Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, dignitaries on the dais, my senior government officials from Uttar Pradesh, my colleagues from the industry, friends from the media, ladies and gentlemen. For the last 2 hours, I think सबके mind में clarity है कि Uttar Pradesh is ready for investment. It has transformed, it has reformed. And as a business person, sir, आपके जो सबसे बड़े spokesperson हैं, जो आपने कहा दर्शन किरण नंदानी जी, जो सबसे बड़े फैन हैं योगी जी के, I think it gives us immense confidence that these are the stories which can be replicated in Uttar Pradesh. Sir, I would like to thank you for giving CII the opportunity to partner in this Global Investor Summit. CII Northern Region is absolutely aware that Uttar Pradesh ka impact on not only India, but also the opportunity where it comes for investing in India is key. And we look forward to partnering not only in this Global Investment Summit, but also as a sustainable partner in this inclusive growth opportunity. तो सर, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया, मुंबई आए और सबको आमंत्रित किया। और I look forward that there will be more investments coming in the heartland of our country, in Uttar Pradesh, in the Global Investment Summit, in the 3D event. Thank you very much, ladies and gentlemen. थैंक यू वेरी मच सर। और आप सभी का भी देवी सज्जनों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये दर्शाता है कि आपके विश्वास को जो उत्तर प्रदेश में है, जो लीडरशिप ऑफ माननीय मुख्यमंत्री जी में है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंचासीन हमारे सभी हमारे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, मंत्रीगण, सबका धन्यवाद। आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए आप अपने स्थान पर बने रहें और उसके बाद आप सभी आमंत्रित हैं भोजन के लिए। इनवाइटिंग यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन टू प्लीज जॉइन अस फॉर लंच।